Hello friends, my name is Akansha Sahu. Presently, I am pursuing master's degree in biotechnology from Delhi Technological University. I have done my graduation in biotechnology from Bundelkhand University, Jhansi. I have full 3 years of teaching experience and my subject of specialization is biology. I qualified IIT JAM 2022 with a rank of 546 and GAT-B 2022 with a rank of 109. I have worked as a teaching faculty in one of the coaching institute of Jhansi, that is EduVista. Earlier, I have also worked as a freelancer and I have a very strong passion about teaching and I wish to pursue my career in this profession in future. So now I will be discussing about the lesson plan. That means I will be discussing how many hours I am going to devote to each and every chapter of biology part of class 10th NCERT. Okay, so let's begin. So the first chapter is life processes. So this whole chapter will be completed in 21 hours. Okay. Next is under this heading, what are life processes? So in this part, I will be giving you a brief introduction about this whole chapter. So this part will be completed in 21 minutes. Okay. Next, autotrophic nutrition will be completed in 2 hours. Heterotrophic nutrition will be completed in 1 hour. And how do organisms obtain the nutrition? This part will be completed in 1 hour. Okay. Next is nutrition in human beings. This part is quite lengthy, so that is why this part will take time. So it will be completed in just 4 hours. Okay. Next is respiration. So respiration in plants and animals, both it will be completed in 4 hours. Next, transportation in plants will be completed in 2 hours. And transportation in humans, that is circulatory system, that part will be completed in 3 hours. Okay. Next is excretion in human beings. This part will be completed in 3 hours. And excretion in plants will be completed in 1 hour. Okay. So this was all about life processes. So life processes part will be completed in all 21 hours. So now the next chapter is control and coordination. Okay. So control and coordination in all this chapter will take 12 hours. Okay. So under this, animal nervous system. Reflex action will take 2 hours. Human brain part will take 2 hours. How are tissue protected? How are tissues protected? This will take 1 hour. How does nervous tissue cause action? That is, you can say that impulse part, nerve impulse part, that will be completed in 1 hour. Okay. Next is coordination in plants. So under this heading, immediate response due to stimulus. This part is going to take 1 hour. Movement due to growth will be completed in 2 hours. And hormones in animals will be completed in 4 hours. So this was all about control and coordination. Okay. Now let's proceed. How do organisms reproduce? Okay. So this chapter in all will be completed in 12 hours. Okay. Now next topic which we will cover in this chapter will be, do organisms create exact copy? So this part will take 1 hour. Modes of reproduction used by single organisms. Under this heading, fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. So all these methods or modes of asexual reproduction will be completed in 1 hour. Okay. Sorry, 4 hours. Okay, this will be completed in 4 hours. Next, we will proceed to sexual reproduction. So, sexual reproduction in flowering plants will be completed in 3 hours. And sexual reproduction in human beings,
Under this heading, male reproductive system will be completed in 1 hour and female reproductive system will be completed in 1 hour. What happen if egg not fertilized will be completed in 1 hour, and reproductive health will be completed in 1 hour. Next is heredity. This whole chapter will take 7 hours. So under this heading, accumulation of variation during reproduction will be completed in 2 hours. Rules for heredity will be completed in 1 hour. How do traits get expressed will be completed in 3 hours, and sex determination will be completed in 1 hour. So this was heredity. And the last chapter is our environment. This whole chapter will be completed in 6 hours. Okay. Under this heading, ecosystem and its components will be completed in 2 hours. Food chain and food webs will be completed in 1 hour. How do our activities affect environment? 1 hour. Ozone layer depletion 1 hour, and garbage management in 1 hour. Okay, so this was all about the lesson. Next, I will be discussing about the very important topic of heredity, that is sex determination in humans. Okay, proceed. First of all, let's understand the type of chromosomes which are present in human beings. Okay, so total number of chromosomes in human beings is 46. Okay, and all these 46 chromosomes are arranged in 23 pairs. As you can see on the screen that all the 46 chromosomes are arranged in 23 pairs. So basically we human beings have two types of chromosomes. One is autosome and another is sex chromosome. Okay, so all the pairs of chromosomes starting from 1 to 22 are known as autosomes. Okay, and the 23rd pair, जो 23rd pair होता है, which determines the sex of an offspring, that is known as sex chromosome. Okay, so sex chromosome female में XX टाइप के होते हैं और मेल में XY टाइप के होते हैं. ओके, जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है वो फीमेल में XX टाइप का होता है और मेल में XY टाइप का होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट, मेल में जो गैमीट्स बनते हैं, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ गैमीट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन मेल एंड फीमेल. ओके, सो मेल में जो गैमीट होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं. ठीक है, एंड मेल में दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, एक एक्स टाइप का बनता है और एक वाई टाइप का गैमीट बनता है. ठीक है, एंड फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का एग बनता है, दैट इज एक्स. Okay, so this was about the type of gametes which are produced in male and female. Fertilization क्या होता है कि fusion of male and female gamete is known as fertilization. ठीक, this is egg cell, this is ovum and this is sperm. जब इनका fusion होगा, fertilization होगा, तो क्या बनेगा? zygote बनेगा. zygote के बाद क्या बनता है? offspring बनता है. ठीक है, so these are few basic concepts जो होने चाहिए before studying sex determination. Okay, now as you can see, now we'll start understanding sex determination. As you can see, male में जो 23rd pair of chromosome होता है उसका क्या arrangement होता है? XY टाइप का अरेंजमेंट होता है. और फीमेल में 23rd क्रोमोसोम का कैसा अरेंजमेंट होता है? XX टाइप का अरेंजमेंट होता है. ओके, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेल में दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, दो टाइप के स्पर्म्स बनेंगे, एक एक्स टाइप का बनेगा और एक वाई टाइप का बनेगा. ठीक है, और फीमेल में एक एक्स टाइप, फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप का, दैट इज एक्स टाइप का ही एग बनता है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, जब एक्स टाइप का स्पर्म एग से फ्यूज होगा, फर्टिलाइज होगा, तो हमारा जाइगोट बनेगा. और जाइगोट में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन कैसा बन जाएगा? एक एक्स यहाँ से आएगा और एक एक्स इस एग सेल से आएगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा. ठीक है, और ये वाला कॉम्बिनेशन हमने किस में देखा था? फीमेल में देखा था. ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग हमारे कैसा होगा? फीमेल होगा. ठीक है, नेक्स्ट, अगर Y टाइप का स्पर्म जो है वो X टाइप के एग से फ्यूज होता है,
ये वाई टाइप का स्पर्म अगर एग सेल से फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा तो उसमें क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक्स वाई टाइप का अरेंजमेंट होगा। ओके, और ये अरेंजमेंट हमने किस में देखा था, मेल में देखा था। ठीक है, तो हमारा ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, मेल होगा। ठीक है, सो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमन बींग्स। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बना है, जो बेबी बना है, उसका सेक्स, उसका जेंडर कैसा है, मेल है या फीमेल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।